नाइन्थ रो तुम रहा adverbs and adverbials ठीक है adverbs and adverbials एतरे हम पढ़िबा यूज ऑफ सम adverbs यूज ऑफ सम adverbs स्पेशल adverb किछि ता विषय पढ़िबा तार आमते adverb तो बहुत अनलिमिटेड हियर देयर बी गोटे एडवर्ब हो पार प्रोनाउन हो पार है कि ये स्पेशल एडवर्ब किसी बुझा हाँ किसी एडवर्ब देखा किसी वर्ड देखा सम वर्ड्स दैट यूज एज एन एडवर्ब समटाइम्स दैट सेम वर्ड यूज्ड एज ए कंजंक्शन आकार भी यूज हो देखा फॉर एग्जांपल देखा येट स्टिल ऑलरेडी नो लॉन्गर ये चार्टा विषय फास्ट पढ़ा यार सब पॉजिटिव एडवर्ब है हैं सब जाक येट देन है स्टिल तापर है ऑलरेडी देन नो लॉन्गर किसी नेगेटिव एडवर्ब किसी पॉजिटिव एडवर्ब है अच्छा ये तुम पढ़ी कंजंक्शन आकार कौन पढ़ कोलेटिव कंजंक्शन पढ़ फैन बॉयज कौन फैन बॉयज रे येट पढ़ी कंजंक्शन आकार लिंकर आकार है फॉर फैन एटा कौन फॉर एटा एंड एन है नर बी रे है कौन बट ओ रे और एस रे सो है क्वालिटी कंजंक्शन पढ़े एट भी पढ़े एट वर्ड कंजंक्शन हो पारे मैंने जोग कर दुटा सेंटेंस को ओके दुटा सिंपल सेंटेंस को जॉइन कले कौन हम गोटे कंपाउंड सेंटेंस हम ओके आस देखा से एट्र एडवर्ब हम मुझे तुमको कहती गुड़े कंजंक्शन अच्छे जोटा कि एडवर्ब आकार यूज है भर एट गोटे है नो लॉन्गर गोटे अच्छे नो सुनर सेमती है कंजंक्शन हम एडवर्ब भी हम है ये देखिए येट इज यूजुअली यूज्ड इन ए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जोटा इंटरोगेटिव सेंटेंस बा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने क्या कह जाए प्रश्नवाचक हाँ द सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम इज ए इंटरोगेटिव इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ही कमिंग और नॉट इज ही कमिंग और नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके हाँ इंटरोगेटिव मैंने क्वेश्चन जोटा कि यूजुअली इंटरोगेटिव स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स इज आर वाज वेयर डू डज डिड और हाव वाज हैड हेल्पिंग वर्ब आरंभ कि कौन हुए इट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स व्हाट हु हाउ व्हाई व्हिच व्हेन व्हेयर हैं हुज ये सब हुए ना तेणु यहाँ इंटरोगेटिव आउ नेगेटिव देख जोटा इंटरोगेटिव नेगेटिव यूज हो से इंटरोगेटिव यूज हुए से पॉजिटिव सेंटेंस यूज हुए मन है जो एडवर्ब हो कंजंक्शन हो जदि नेगेटिव यूज हो नास्तिसूचक वाक्य सी अस्तिसूचक वाक्य पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस यूज हम ना यहाँ गोटे नेगेटिव एडवर्ब नेगेटिव यूज हुए आस ना अर्थ से तथापि आसी ना हि हाजंट कौन कम येट हि हाजंट कम येट है ये भाया ना देखा ये देखा used in interrogative or negative sentences ओके नास्ति सूचक बा प्रश्न सूचक प्रश्न है हाँ से व्यवहार क्लियर फॉर एग्जांपल आम यूजुअली वी यूज इट व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग आम तो किसी एक्सपेक्ट करछे कि आशा करुचे अरे से आछी कि आछी कि तमें कौन से आसी ना नहीं मैं जाना चाहूँ आशा करुँच आसवाटा वी आज एक्सपेक्टिंग हिज और हर अराइवल ओके हाँ से जगह आम येट तुम आंसर कौन दब
yes he had come or no not yet एपर्यंत नुह एपर्यंत आसेनी आगू आसपे ओके ये किसी कर देख दे हावंट पोस्टेड द लेटर येट दे have not posted the letter yet यूजुअली शेष व्यवहार यूजुअली प्रायतः है हाँ सेमती प्रश्न भी शेष यूज हम है जमती कि हाज द पोस्टमैन कम येट हाज द पोस्टमैन कम येट एपर्तन आसला कि पोस्टमैन बदल हाँ वी आर एक्सपेक्टिंग द पोस्टमैन आम आशा कर पोस्टमैन कवि बिकज वी आर एक्सपेक्टिंग एनी मेसेज एनी लेटर फ्रॉम हिम ओके दैट इज वाई वी आर इनक्वायरिंग अबाउट हिज अराइवल तास पहुँचवार ओके से कह क्लियर इन ए फॉर्मल वे वी कैन यूज प्लेस इट इन द मिड पोजिशन हाँ यहाँ इनफॉर्मल वे यहाँ जनरली इनफॉर्मल वे है यूजुअली यहाँ इनफॉर्मल व्यवहार इनफॉर्मल माने एमती कथबार्ता होचे एमती होचे स्पोकन इंग्लिश रे बा जनरल फ्रेंड सर्कल रे कथा होचे से जगह रे हमें फॉर्मल ताको कह इनफॉर्मल हला फॉर्मल कोन हमें कौन सी डॉक्यूमेंट्स रे दउचे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच करचे बा गोटे लेटर बा एप्लिकेशन यूज करचे कि गोटे क्या हला से जगह रे हमें सेटा फॉर्मल कोन सेठी हमर राइटिंग टा परफेक्ट होबा दरकार से जगह रे एटा इन जनरल मझरे यूज हुए हला मिड पोजिशन जंती कि he hasn't yet posted the letter देखो he has not लिखी पारे हाँ has not लिखी बेटर hasn't yet posted the letter ये देखो they haven't posted the letter yet से मैंने तो लेटर को पोस्ट करना ये आम इनफॉर्मल वे लिखले तो फॉर्मल वे लिखले येटा आम कौन करा जमती मिड पोजिशन एडवर्ब आसे मिड पोजिशन एडवर्ब कौन हुए ना हेल्पिंग वर्ब पर मेन वर्ब पूर्व लगे ये हेल्पिंग वर्ब रहा है और नेगेटिव एडवर्ब ये नेगेटिव रे हुए ये नेगेटिव नुह नेगेटिव रे यूज हुए है सो नॉट फॉर हाज नॉट फॉर लगे क्लियर हाँ अच्छा देन आसिले स्टिल कौन स्टिल कौन एपर्यंत स्टिल से बदलानी हम कौन कथा समय प्राय सब जिन यूज करचे ओके इंग्लिश आम प्राय व्यवहार करचे किंतु रियल लाइफ रे प्राय यूज करचे किंतु कौन होचे हम ताकू केमिति यूज करचे कौन केमिति यूज होचे ताकू हम देखिना केबे बुझे चेष्टा कर स्टिल बदलानी एते कहला पर दैट मीन्स ए पर्यंत है ये अर्थ आजीवन बदल मे भी बदल पाए ओके से अर्थ वी यू स्टिल टू टेल दैट समथिंग इज गोइंग ऑन लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड आम एपर्यंत बदल कौन स्टिल ही hasn't changed और इट hasn't changed ओके एपर्यंत से चेंज है आम बहुत दिन हो गला चेंज है आम एक्सपेक्ट करूँ चेंज हो बार बट द चेंज इज नॉट देयर ओके आसनी अपन चेंज आज देखा है ये यूजुअली कम इन द मिड पोजिशन यूजुअली मिड पोजिशन आसे इन क्वेश्चन एंड पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ नेगेटिव नुह यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नुह यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस आम यूज हुए for longer period expectation में यूज है and used in mid position mid sentence है mid position ओके यूजुअली मिड पोजिशन यूज क्लियर मैं मझे यूज हम कौन ना पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव रे कौन हम नेगेटिव कौन शेष आसो है and after the subject in negative statement for special emphasis हाँ है generally
कौन हुए मिड पोजिशन आसे नेगेटिव बा पॉजिटिव रे नेगेटिव बा पॉजिटिव रे और पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव ओके किंतु स्पेशल एम्फेसिस देला मजे लगे हाँ स्पेशल एम्फेसिस माने कौन आम स्टिल ओके से लगे फॉर एग्जांपल देखिए आर यू स्टिल वर्किंग ये एम्फेसिस देले ये कौन ये एम्फेसिस आर यू स्टिल वर्किंग तुम एबे भी काम कर दिन 10 वर्ष तक कहते एबे कहते ताकि छे ना ओके लाइक दैट और इज लीला स्टिल एट होम स्कूल स्कूल एबे भी अच्छी ऑलरेडी इट इज 6 o'clock समथिंग ओके इवनिंग इज सी स्टिल एट स्कूल से स्कूल अच्छी कि तुम इनक्वारी कर ओके एक्सपेक्ट करते कौन इट इज 6 o'clock ऑलरेडी सो सी मे बी एट होम बट whether you want to know whether she is at school or not okay you can ask is she still at school or not okay Vishnu still hasn't finished eating generally ये मझे यूज हुए generally है जदि ना तो कौन हुए सब्जेक्ट पर देख हाँ सब्जेक्ट पर यूज होला is she still working at the okay got is she working is at school still at school এটা क्वेश्चन और विष्णु still hasn't finished eating और सीमा still hasn't finished eating देख ये कौन हो देख लक्ष्य करवा ये कौन हो सब्जेक्ट पर स्टिल जनरली मिड पोजिशन आसो सब्जेक्ट किंतु यूजुअली कौन हुए एडवर्ब कौन इट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब ये हाजंट पाखे लगी था टेक्निकल डिफरेंट ना कह बट स्टिल ये है कौन सी सब्जेक्ट पर आसे ओके सब्जेक्ट पर आसपर है ऑलरेडी कौन देखा ऑलरेडी मीन्स कौन बिफोर नाउ अरे से आसला ना हाँ सर ऑलरेडी से आसीगला ताने कौन आम जो समय कथा हो पूर्व ना ना बर्तमान ओके समथिंग हैपेंड बिफोर वी आर टॉकिंग बिफोर द स्पीकर इज टॉकिंग जो स्पीकर कहूँ पूर्व घटी जाए ओके हाँ से देखा ऑलरेडी कौन यूज्ड मीन्स लिख दबा फर्स्ट मीनिंग होची कौन ना बिफोर नाउ ओके एंड यूज्ड ऑलरेडी कोड हो जाओ मिड पोजिशन यूजुअली यूज है हाँ मिड पोजिशन we use it in question and affirmative sentence but not in negative हम already use करें we cannot use already in a negative sentence हम नास्ति सूचक पाके never we cannot use already in the interrogative प्रश्नवाचक or in a positive sentence we can use already से आसिलानी कि हाँ ना हाँ सर he has already come आसिलानी positive sentence और हाजी ऑलरेडी कम आसिलानी कि क्वेश्चन मार्क आसपर किंतु हाज नॉट ही और ही हाज नॉट ऑलरेडी कम एमती हम कर नेगेटिव आम यूज कर बुझे नास्तिक कर ओनली यूज्ड इन पॉजिटिव और इंटरोगेटिव पॉजिटिव एंड सॉरी और लिख लो अर्थ बोले जो interrogative sentence goes in the mid position or end position मझे कि शेष it can go with
end position or mid, usually mid position. Mid position is a formal way of writing the using the adverb already. Okay, when you are using already as an adverb, then you must write it in the mid position. Okay, it is the formal way. Mid position na formal way. End लिखले एटा इनफॉर्मल वे कौन हो इनफॉर्मल आम राइटिंग जेहेतु एकाडेमिक वे इन एकाडेमिक राइटिंग आम पाठ पढ़ुचे ना हाँ एकाडेमिक राइटिंग सब कौन करा मिड पोजिशन दबा क्लीयर यूजुअली एडवर्ब सब मिड पोजिशन दबा ए एडवर्ब लगला ओके सो आम गोटे देखा कम्स इन मिड पोजिशन आम यूजुअली मिड पोजिशन करवा है और एंड पोजिशन है गोटे एग्जाम्पल देखा आई हैव पोस्टेड द लेटर ऑलरेडी देख आई हैव पोस्टेड द लेटर ऑलरेडी ओके और एंड पोजिशन कौन है एंड पोजिशन आम यूज कले तापर देखा they have already returned home they have already returned home they have already returned home ओके हाँ देखो दुईटा भितर कौन डिफरेन्स रोज देख देखो ये आम कौन कले अलरेडी कौट यूज कले ना एंड यूज करे ये कौन कले आम एंड यूज कले ये कौन अलरेडी कौन कले ना मिड यूज कले डिफरेंस देखो तुम निजे लेटरटा सेन्टेन्सटा कह तुम फिल कर व्हिच वन इज मोर फॉर्मल और व्हिच वन इज इनफॉर्मल ओके आई हैव पोस्टेड द लेटर ऑलरेडी अरे इनफॉर्मल तुम लगे आई हैव ऑलरेडी पोस्ट सॉरी दे हैव ऑलरेडी रिटर्न होम तेणु यहाँ तुम बेस फर्माल लगे तुम लगातार कह इंग्लीश में शुणी पढ़ तुम देखो मिड पोजिशनटा तुमको भल लगे सुंदर लगे इट द फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग समथिंग और राइटिंग समथिंग दीज आर द एडवर्ब्स व्हिच आर यूजुअली यूज्ड इन द मिड पोजिशन ओके ये ऑलरेडी केवल नेगेटिव पोजिशन में यूज होने नेवर already never used in negative sentence negative sentences okay हाँ कभी नेगेटिव सेंटेंस रे यूज क्लियर हाँ ना सुधा कौन है yet still already okay हाँ yet still already mid position okay clear हाँ देखो हाँ no longer any longer anymore no longer any longer और एनी मोर कौन एनी मोर ओके या भी तो पे लक्ष्य बारे समस्ते नेगेटिव एडवर्ब देखो नो लॉन्गर प्योरली नेगेटिव एडवर्ब आउ एनी मोर कौन हुए नेगेटिव सेंटेंस लगे तेणु मुझे कहली नेगेटिव है एमाने कई पॉजिटिव ताने नुहति ये पॉजिटिव नेगेटिव कराए नेगेटिव लगे पॉजिटिव लगे नेगेटिव कर दिए ये कौन नेगेटिव सेंटेंस रे लगे तेणु ऑलमोस्ट समस्त नेगेटिव सेंटेंस लगती भाव दीजा तो यूजुअली नेगेटिव ओके तो नो आउ यार कथा अर्थ कौन नो लॉन्गर एंड एनी लॉन्गर सजेस्ट दैट समथिंग हैज कम टू एन एंड यार अर्थ कौन नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर okay suggest that something come to an end
किसी गोटे शेष हाँ आसूँ है कहवा ही इज नो मोर हियर से ना ओके हाँ ही इज नो मोर अरे अवस्था कौन ना ही इज नो मोर आउ ना तब ना डाक्तर कहते ही इज नो मोर कही दिखाते प्राय सेम सर आगे आगे कौन नो मोर हाँ आउ ना कम डाउन एंड ऑलमोस्ट एंड तेणु नेगेटिव आउ नो लंगर हाज ए नेगेटिव मीनिंग मुझे कहते नो लंगर इज ए नेगेटिव मीनिंग यार गोटे नेगेटिव मीनिंग थाए नेगेटिव मीनिंग थाए ओके नो लंगर गोटे नेगेटिव मीनिंग थाए आउ एंड इट गोज द मिड पोजिशन नो लंगर कौन थाए इन यूज्ड इन मिड पोजिशन ओके ये नो लंगर सब मिड पोजिशन लगे कहीं नेगेटिव अच्छे बोलिकी नेगेटिव मीनिंग आम जो नटटा मझे लगोचे नटटा कौन वाक्यर मझे लगोचे नुह कि क्वेश्चन भी सेमती मझे लगुच WH हो कि ये पर हो हेल्पिंग वर्ब पर हो कि मिड पोजिशन आसो आउ एनी लंगर एनी मोर इज एंड एनी लंगर आउ एनी लंगर एनी मोर यूज एट एंड मार पेन लाइन पूजा एनी लंगर एनी मोर any longer anymore use at the end एटा एंड रे यूज एंड रे हला हां एटा गोटे जिनस मन रख एट द एंड रे यूज तापर नेगेटिव एटा नेगेटिव सेंटेंस रे यूज कोन हो देखो ये नेगेटिव कर देला सेंटेंस को ये कौन गला ये ना नेगेटिव सेंटेंस रे यूज हो एंड ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेट अच्छा देखिबा नो लॉन्गर लिव आई नो लॉन्गर लिव इन सुंदरगढ़ हम कहबा आई नो लॉन्गर लिव इन सुंदरगढ़ आई नो लॉन्गर लिव इन पुरी मन कर कहली मैं पुरी रही देखो एटा नो लंगर जो काटिदेवा आई लिव इन पुरी पॉजिटिव सेंटेंस होची किंतु नो लंगर कौन नेगेटिवली यूज होची ये नेगेटिव करदेला बुझे कथा कथा हाँ ये पूरा सेंटेंस को नोट भाया यूज करदेला ना नो भाया करदेला पूरा ये पूरा नेगेटिवली यूज हम है किंतु एनी लंगर एनी मोर नेगेटिव सेंटेंस यूज हे लास्ट एंड देखा आई डू नॉट लिव इन आई do not live in Puri anymore or any longer जहाँ लगे चलो है मु पुरी रोनी एनी लंगर बा एनी मोर जहाँ लगे है यहाँ तार ये व्यवहार है he is not he does not live at home any longer से घरे रोनी आ बाहर बुझे ओके हाँ बुझे तो हाँ यहाँ है नो लंगर एनी मोर देन आसवा एगो आम गप मानक प्राय यूज करते यूज माने लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग द किंग हैड ए डॉटर ब्यूटीफुल डॉटर द किंग loved to listen to stories and his daughter also fond of listening stories नुह कि ये पढ़ते ना कि एगो मैंने कौन बहुत पुराना मैंने पूरा पास्ट यहाँ मनकर पास्ट यहाँ मनकर पास्ट यहाँ नाउ प्रेजेंट यहाँ मनकर फ्यूचर यार फ्यूचर ओके ये पास्ट पोजिशन यूज हम पास्ट पोजिशन मैंने सिंपल प्रेजेंट कौन पास्ट पोजिशन कौन सिंपल प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट माय पास्ट सिंपल पास्ट यूज हम ये आम एगो को केबे भी आम यूज कर पारिबा नहीं हमर
ये पास्ट परफेक्ट बा पास्ट कंटिन्यूअस यूज करवानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करवानी आम ओनली पास्ट सिंपल यूज करवा ओके हाँ लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग और लॉन्ग लॉन्ग एगो एक देयर वाज ए किंग लिव्ड इन रशिया हाँ तेणु ये व्यवहार भाष कौन बहुत लेंदी पास्ट को बुझेब यूजुअली हाँ माने एमती 6 मास 3 मास नुह एगो मीन्स बहुत पास्ट इवन यू कैन से द अनसेट पास्ट और द यूजुअली वी यूज इन स्टोरी टेलिंग आम स्टोरी टेलिंग रे एटा यूज कर सब स्टोरी प्राय लिखि लॉन्ग एगो और एगो लॉन्ग लॉन्ग एगो ओके ये हस देखा आई मेट हर 10 years एगो देखिए यूज्ड इन पास्ट सिंपल यूज्ड इन long past sentences and used with simple past form रे संगे व्यवहार हम क्लियर हाँ आम एमती करवा आई मेट हर 10 years ago 20 years ago 30 years ago 1 month ago कहबानी कि 1 day 5 days ago कहबानी years लगे फ्रॉम दैट टू 10 plus सपोज आई मेट हर 10 years ago आम कहबानी जे 2 months ago नुह एटलिस्ट years जो 10 years मैंने ए डेकेड गोटे 10 वर्ष दशंधि गोटे दशंधि होगा ना कि सेमती हम और द एक्सीडेंट टुक प्लेस ए फ्यू मिनिट्स एगो हाँ ये केते जगह सडन ये को यूज करवा हम को एम्फासाइज करवा केते करवा ना एम्फासाइज जो स्टोरी टेलिंग रे लॉन्ग लगेवा हाँ एम्फासाइज कले हाँ ये शेष लगेवा द एक्सीडेंट occurred a few minutes ago एठी एगोटा कौन हो देख दुईटा कर यूजेस ये अच्छे मुझे आगे कौन कली ये लंग एगो को बुझेला है एठी कौन हो तुम टाइम टाक एम्फासाइज देवाई एगो यूज कर ना फ्यू मिनिट्स एगो टे मिनिट एगो है ये एक्सीडेंट को आम यूजुअली एम्फासाइज कले कौन कले एम्फासाइज कले एगोटा को मीन टाइम टा कौन एडवर्ब टा को ये कले क्लियर तो हाँ से जगह आई यूजुअली सब एंड पोजिशन लगे और बेले बेले फास्ट पोजिशन लगे बेले बेले लॉन्ग लॉन्ग एगो ये स्टोरी टेलिंग है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग देयर वाज ए किंग बहुत वर्ष तले गोटे राजा थे एमती भी हो पारे हाँ आम पढ़े एडवर्ब ऑफ टाइम समटाइम्स यूज at the end of at the beginning of the sentences to emphasize the timing or the adverb बेले बेले आम एडवर्ब को एम्फासाइज करने कौन स्टार्टर यूज करे बहुत दिन बहुत बहुत वर्ष तले जड़े राजा थे गप कहला एमती पोएटिक वे कह आम यहाँ एम्फासाइज कर लगे पार क्लीयर हाँ यहाँ ये करला ये लख तापर आम आसा आगू बर्तमान देखा नेभर बर्तमान देखा नेभर एभर स्कार्सली हार्डली कौन तो नेभर एभर सेल्डम सेल्डम कौन सेल्डम ओके नेभर एभर सेल्डम स्कार्सली हार्डली है देख हाँ या भर पे लक्ष्य कर या भर यही एभर टाक छाड़देले बाकी सब नेगेटिव एडवर्ब बाकी सब नेगेटिव एडवर्ब एभर एभर टाक हम छाड़देवा बाकी सब कौन नेगेटिव एडवर्ब ये सब नेगेटिव एडवर्ब हाँ कौन कहती नेगेटिव एडवर्ब नेभर स्कार्सली
हार्डली आ सेल्डम यार अर्थ कौन एगुड़ाकर अर्थ कौन ना ऑलमोस्ट जीरो नो यार मीनिंग हो कौन ऑलमोस्ट जीरो सुन पाखापाखि मुझे प्राय किसी खाए दैट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो मो पेट पुणी मत मनकर मुझे सकाल 3 पट रुटी जलखिया खाई दूसरी मत यदि फाए रुटी मिलता तेल मो पेट पुणी मुझे प्राय किसी खाए ओके से टाइप नेगेटिव एंड ऑलमोस्ट जीरो द मीनिंग इज ऑलमोस्ट जीरो है आस नेवर माने कदापि नुह पूरा जीरो हार्डली माने प्राय अल्प तुम पढ़ी गोटे बेगर्स एट द डोर बेगर्स एट द बेगर एट द डोर आम क्लास 4 पढ़ाला कौन पढ़ाला हाँ द ओल्ड कपल हार्डली हार्ड एनीथिंग टू इट तक प्राय किसी नाला नो कि हाँ फॉर दैट डे एंड दैट डे वाज क्वाइट क्लाउडी स्टॉर्मी एंड कोल्ड नो कि देखो यार नेगेटिव यहाँ कौन हुए यूजुअली कम्स इन द यूजुअली यूज इन द मिड पॉइंट इन द मिड सेंटेंस कौन मिड सेंटेंस ओके यूजुअली मिड सेंटेंस माने दे कैन नॉट गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड ऑफ सेंटेंस केबे भी यूजुअली कहीं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी ओके ऑल दीज आर नेगेटिव ओनली एवर is the positive one and it is used in a positive or interrogative question interrogative sentence okay अच्छा देखिए he never calls me okay he never calls me से पता केबे भी कॉल करेनी जीरो नुआ हाँ आम एटा को एमती करबा he doesn't call me clear he doesn't call me almost एक meaning से मतलब कॉल करे ना he never calls me clear second scarcely 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 they scarcely come here almost nil it scarcely होची कदवा क्वचित scarcely seldom almost एका देखो डिफरेंस और दे seldom come here they seldom come here ये ऑलमोस्ट नील जीरो नुह एटा जीरो नेवर ऑलमोस्ट जीरो ओके बट scarcely seldom परफेक्टली जीरो नुह नियर टू जीरो ओके से दे सेल्डम कम हियर प्राय से क्वचित आसे क्वचित माने कौन ए वर्ष 6 मास 5 वर्ष 10 वर्ष भीतर एवं देखा 10 वर्ष तले देखा ओके अर्थ से स्कार्सली भी से ऑलमोस्ट जीरो ऑलमोस्ट नील ओके देन आसला हार्डली भी आको बढ़िया हार्डली आई हार्डली इटन anything today ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଜି କିଛି ଖାଇନି ହାର୍ଡଲି ମିନ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଛି ଖାଇନି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଛି ହେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଛି ଖାଇନି ହାର୍ଡଲି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭଲି ହେଲା ଏ ମିଡ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଏଠି କ'ଣ ମେନ୍ ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଦର ତୁମେ ହେଲ୍ପିଂ ଯଦି ଭର୍ବର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ଆସିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ଭର୍ବ ଥିବ ସିଙ୍ଗଲ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଥିବ मैंने जमी कम है से जगह आम कौन करिया ना मेन भर्ब पूर्व आस क्लीयर हाँ तो हार्डली अर्थ ऑलमोस्ट जीरो ये भी ऑलमोस्ट जीरो क्योंकि ये तीन टाकर अर्थ ये पूरा ये आउट के नेगेटिव देखो सेल नेवर पूरा जीरो है ये जीरो टू टिके ହେଇପାରେ ସେଲ୍ଡମ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ରେୟାରଲି ତୁମର ଦେଇନି ରେୟାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ରେୟାରଲି ତୁମ ଦେଇନି କାହିଁକି ରେୟାରଲି ସେୟା ସେଲ୍ଡମ୍ ଯା ରେୟାରଲି ସେୟା କ୍ୱଚିତ୍
तो सेल्डम जगह रेयरली को यूज करें सेल्डम रेयरली स्कार्सली ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यू कैन यूज दिस थ्री इन द प्लेस वन अनदर ओके बट हार्डली टी डिफरेंट हार्डलीटा कौन प्राय नेगेटिवली यूज हुए ओके हार्डली कौन हुए यूजुअली कम्स विथ एनीथिंग तुम हाँ गोटे जिन मन कर जो ये नेगेटिव एडवर्ब यूज कर नथिंग लिखो ना नथिंग लिखो ना कहीं अलरेडी मैंने नेगेटिव तेणु आउ गोटे नथिंग मैंने आउ गोटे नेगेटिव वर्ड यूज हो इंग्लीश में सेम वर्ड बारंबार यूज हो नेवर यूज वी कैन नॉट यूज नो नो और नॉट नो एमती आम यूज करें है तेणु ये कौन हो नॉट ना कि नो ना बट स्टिल दे आर दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस आम तो कह नेगेटिव सेंटेंस आम जो कह मंद नुह से पिलाटा मंद नुह भल भी नुह यहाँ गोटे नेगेटिव रिमार्क आम गोटे पिला विषय गोटे लोक विषय कह लोकटा केमती मंद नुह दैट मीन्स कौन भल भी नुह यहाँ नेगेटिव रिमार्क भल रिमार्क नुह तापाइका ओके आम जो कह भल नुह से अलग जिनस मंद हो पारे कि आम कह मंद नुह ताने भल भी नुह ओके आम डायरेक्ट भल मंद नुह बोली कहीपारनी तेणु माने खराब लोकटे बोली खराब लोकटे भी कहीपारनी स्टिल मंद बोली कहूँ ओके नेगेटिव आम एनीथिंग यूज करें केवे कह नथिंग यूज करूँ आउ गोटे नेगेटिव यूज यू कैन नॉट यूज नथिंग वी कैन नॉट यूज नथिंग आम ये नथिंग व्यवहार करवानी है हाँ यूज विथ दिज एडवर्ब अच्छा नथिंग यूज करवानी केवे मन है हाँ क्लियर हाँ और नॉट फॉर यूज करवानी नॉट डोंट फॉन्ट एगुड़ा यूज करवानी नो यूज कर है क्लियर हाँ गला आगुड़ाक कौन हुए ये कौन हो ना आम जो यूजुअली एक मिड पोजिशन आसे किंतु दिस एडवर्ब आल्सो कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस स्टार्ट भी यूज हम स्टार्ट भी यूज हो पार आस देखा है नेवर सेल्डम हार्डली स्कार्सली रेयरली और गोटे कौन लगे कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग बिगिनिंग रे व्यवहार करवा हाँ केते बड़े हम कहीं हम ना जस्ट टू शो द एम्फासिस शो द स्ट्रेस एम्फासिस ताको एम्फासाइज करने एडवर्ब टाको आम यूज करिया एंड रे सॉरी स्टार्ट माय फॉल्ट है देखिए केमती करिया बट देयर सम रूल्स देयर सम रूल्स वी हैव टू फॉलो इट किसी रूल अच्छी वी जस्ट कैन नॉट ब्रिंग द एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस इफ यू वांट देन we have to make some change we have to make some change so that it can agree with the verb agree with the subject okay तब जो change करें ताले subject से agree करें okay हैं usually कौन होगा it takes the question form when we use the negative adverb at the beginning of the sentences the sentences becomes a takes a question form तो question form प्रश्न रे कौन होची प्रश्नवाचक वाक्य हो प्रश्नवाचक वाक्य माने कौन द हेल्पिंग वर्ब कम्स फॉरवर्ड आम इनवर्स हो जाऊँगी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब ये आगू पलि आला कौन है आगू को पलि आसला ये जो था ये पलि आसला ओके हाँ इनवर्स ओके आम इनवर्जन करवा इनवर्स करदे हाँ केमती करवा ना ये वाक्य को करवा ये वाक्य को आम करवा केमती करवा देख ही नेवर कॉल्स मी देख नेवर ये हेल्पिंग वर्ब कौन अच्छी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अच्छे he calls does ही ये इनफिनिट है जो बेस्ट फॉर्म है जो कौन जो बेस्ट फॉर्म है जो आउ एस लगे साज जाओ गोटे मिनट है हाँ सो नेवर डज ही कम नेवर डज ही कम नेवर डज ही कॉल ओके नेवर डज ही कॉल मी क्लियर ओके हाँ सेकेंड कौन हम ना दे स्कार्सली कम हियर तुम एम किछ कर परियो स्कार्सली डू एटी कोन
प्लुराल फॉर्म अच्छे सो स्कार्सली डू दे कम डू दे कम डू दे कम हियर ओके देख आम हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन फॉर्मेट कर हाँ ताहले इनवर्स इट ऑलवेज इनवर्स ओके टेक्स द क्वेश्चन फॉर्म ओके सो एटा करबा सेल्डम 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 कौन लगता है डू हाँ सेल्डम डू दे कम हियर ओके हाँ क्वेश्चन मार्क दबाने it takes the question form or you can say the subject verb inverse okay but you can flip the subject verb position but you cannot put a question mark or interrogative mark here okay I hardly eaten anything তাহলে hardly लगाओ first hardly had I eaten helping verb क्या had आपको बोले सर had I eaten okay had I eaten anything today okay clear हाँ हो गया हाँ तो गोटा को छाड़ दीजिए ever usually used in an interrogative or positive sentence or positive sentences interrogative पे लगिवो ever केमते लगिवो ना देखो ever देखो इंटररोगेटिव आम कौन करिया क्वेश्चन रे हैव यू एवर बीन टू लंडन ओके हैव यू एवर बीन टू लंडन तुम लंडन केबे जाइछ कि हाँ बीन माने गो अर्थ रे कहितले सो हैव यू एवर बीन टू लंडन एटी एवर मिड पोजीशन आसिला क्लियर हाँ हाँ तो आंसर कौन लगे येस आई हैव बीन टू लंडन वंस येस वंस और ट्वाइस थोड़े जाइए थोड़े और कौन लगे आई हैव नेवर आई हैव नॉट नेवर नो आई हैव नेवर एवर आंसर कौन होगा आई हैव नेवर मैंने केवे भी जाइए नेगेटिव है आई हैव नेवर बीन टू देयर ओके हाँ क्लियर हैव यू एवर बीन टू लंडन एटा यूजुअल इंटरोगेटिव रे हम हाँ क्लियर हाँ आसो एति लख है